Hi, every. Yeah. So we will wait for 2 more minutes for our friends to join. Till that time, you can just close your eyes for a moment, or maybe get a paper and a pen or a pencil, get some water to drink, create a space around you, and then we will start. Okay. So, all those friends who have joined us today, feel free to come on the screen if you wish to, if your bandwidth allows. Okay. I am muting everybody for now because then everybody, all your home noises and everything shows up on everybody's window. Okay. Just a second. So let me set the music. Yes. Perfect. So even I'm ready now. Okay, so all those who are new here, hi, I'm Ujjwal Batra, and I'm going to be facilitating a very beautiful meditation process in Hindi and English. आज हम एक बहुत ही प्यारा सा ध्यान करेंगे. 1-1.25 घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे. करीबन 10:15 के आसपास हम अपना ध्यान शुरू करेंगे. 10:15 तक हम कुछ और क्रिया करेंगे. We will be practicing something else which we call as the letting go ritual. And we will meditate for like around 30-40 minutes approximately. I'm not declaring any time because even I don't know how long, but around 30-40 minutes. 30-40 मिनट के बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपना. जब हमारा 11-11:15 के आसपास हम लोग फ्री होके, we will just very relaxingly share our experiences, and then we all can leave. Okay. So I'm going to be talking about Vesak in a while. Why Vesak? Why have I? But would you all be comfortable if you all just first tell me if I'm going to check music, okay? मैं आवाज के साथ म्यूजिक को चेक करूंगा. So मुझे just जो लोग स्क्रीन पर हैं वो लोग अंगूठा ऐसे दिखा सकते हैं कि if this music plays in the background in this volume and if I guide you into the meditation, is it good or should I increase the music or increase my voice? What should I do for your comfort? It's good? Okay, perfect. मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ. इतना म्यूजिक रहेगा एंड इतनी मेरी आवाज रहेगी. ठीक है जी. तो जो हम ध्यान करेंगे उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक लाइन को हिंदी और इंग्लिश में बोलता जाऊं. जिसको जो सुनना है वो सुनेंगे, बाकी को नहीं सुनेंगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है जी. सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट. म्यूजिक कैन बी लिटिल लो एज वेल. ओके, इतना ठीक है? इतना धीरे? Perfect. Because what the music which reaches you and the music that I hear is always very different. मेरे को ये कम लग रहा है बट आप लोगों को ठीक लग रहा है, इज गुड. ठीक है. सो अभी आप सब एक छोटा सा कुछ भी, इफ यू कैन गेट अ सोर्स ऑफ फ्लेम, like I'll show you a candle, okay, or you can probably get a small tea light candle. You can see, prefer to light a candle or a diya, but in case if you do not have, then फिर आप माचिस से कर लीजिएगा. अभी ऐसा कुछ नहीं है कि माचिस से अच्छा होता है या कैंडल से अच्छा होता है. द ओनली थिंग इज व्हेन वी आर ऑनरिंग फायर, let us honor it. Right, rather than just very just diffusing things से अच्छा है. If you have, नहीं है कुछ भी अलग बात नहीं है. Just with a lot of love in your heart, या तो माचिस की तीली से आग लगाएंगे, या अगर फिर आपके पास लाइटर है तो लाइटर से लगा लेंगे. ठीक है. So just arrange that. Keep a matchbox with you. Yeah.
एंड क्लोज योर आइज एवरीबडी, लाइट योर कैंडल्स। अगर आप लोगों के पास कैंडल्स या जोत नहीं है तो फिर उसी वक्त आग लगाएंगे जब जलाना होगा, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। एंड विद अ लॉट ऑफ ऑनर इन योर हार्ट, विद अ लॉट ऑफ लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स द फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें आप जो भी डालते हो सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एवरीथिंग चेंजेस, metals become different, merging happens, dissociation happens, burning happens. It's a very beautiful element for alchemy. So thinking of that, honoring the fire element, candle. So I'm going to say a mantra. If you know the mantra, you can say it with me. Shubham karoti kalyanam, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। Om Shanti Shanti Shanti. We just open the flame with a small prayer. The prayer can be any, किसी भी भाषा में आपकी prayer चल सकती है. Okay, now that you guys are ready, a sacred fire is lit, a sacred space is created. I would invite all of you to now bring a paper. अभी इतनी चिंता मत करें कि उज्जवल पेपर बिल्कुल क्लीन हो, लाइनों वाला हो, जैसा भी है अभी ले आइए। और कोई भी अभी रंग मत पूछिएगा, ब्लू पेन हो, लाल पेन हो, हरा पेन हो, काला पेन हो, जो भी पेन है, पेंसिल है, कलम होनी चाहिए, उसको ले आइए। And now take a moment. I'm going to play some music in the background. Take that moment and write the things that you would like to let go of. वो सभी चीजें जिनको अब आप अपने शरीर आत्मा से, अपनी एनर्जी से रिलीज करना चाहते हैं. I'm seeing somebody sitting under the moon. How beautiful is that? You know, how beautiful. Yeah, Vandana ji, beautiful, huh? I wish, you know, I also have a space or something where under the moon we can do our calls. But soon, yeah. सो टेक अ पेपर एंड किसी भी भाषा में लिख सकते हैं. अगर कोई बच्चा अटेंड कर रहा है तो आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आई लेट गो ऑफ दिस एंड दिस. आप सिर्फ वो चीजें लिख दीजिए जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं. सो यू कैन राइट वट एवर इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मल्लू, वट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, पंजाबी, एनी स्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज, कि वॉट डू यू वॉन्ट टू लेट गो ऑफ. It can be I let go of my anxiety, I let go of my lethargy, I let go of my inherited family trauma. You know, I let go of the burdens that I've been carrying. I let go of whatever, you know, maybe your knee issues or whatever. Take a moment, take a moment and allow. Spend some time and keep on writing. कितनी लिखनी चाहिए? जितना भी आपका मन कर रहा है. 2 लिखने का मन है, 3 लिखने का मन है, 4 लिखने का मन है, अपना 3 4 5 चीजें लिख लीजिए. एक ही लिखने का मन है तो एक ही लिख लीजिए. This is a ritual we do every time. So those who are our old participants of Urja Sangha, you know it. आप लोग सालों से इस चीज को समझ रहे हो. Those who are new, you can ask me any question in case you have.
those who do a lot of ancestral work with me, you can also think of releasing the ancestral burdens that you're carrying. If you understand what do I mean by that, you know. You can write it in your own language, in your own way. एंड जैसे हम हमेशा मैं सिखाता हूँ कि कागज़ के एंड पे क्या लिखेंगे कि रिलीज विद ईज. मैं जो भी निकाल रहा हूँ वो शांतिपूर्वक रूप से मैं इन चीज़ों से मुक्त हूँ. हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक या एकदम से पूरा धूम धमाका नहीं मचा देना रिलीज करते हुए. कि आई रिलीज विद ईज, आई रिलीज विद पीस, यू नो. मैं शांतिपूर्वक रूप से हंसते खेलते हुए इन चीज़ों से मुक्त हो रहा हूँ. अब आसानी से मुक्त हो रहा हूँ. Once you're done, take a moment more. 1 मिनट और ले लीजिए. If somebody feels like writing a thank you to the moon, you can write that. If you feel like writing I'm free, I'm free, I'm free, you can write that. You know, you can customize कर लीजिए जैसा भी आपको सही लगता है. कोई सिंबल बनाने का मन करता है वो बना लीजिए. ठीक है, चलिए. हो गया सबका या 1 मिनट और चाहिए? ले लीजिए. चलो, हो गया काफियों का. Great. Now what you can do is just close your eyes for a minute. Connect with the energy of this sheet. जो जो आपने इसमें लिखा है उसका भाव डालिए अग्नि के सामने. आपकी माचिस, लाइटर या कैंडल, जोत, जो भी एनी सोर्स ऑफ फायर, यू कनेक्ट विद इट. यू ट्यून इन, अपने कागज से जुड़िए और ब्रह्मांड में वो भाव डालिए. पुट दैट इंटेंशन इनटू द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी एंड विलिंग टू लेट इट ऑल गो विद ईज एंड पीस. जो भी ये दर्द, दुख, बर्डन्स, लड़ाई झगड़ों का कारण बनी दूषित ऊर्जाएं सभी समाप्त हों. आपकी मेंटल एंजाइटी, आपकी इमोशनल ट्रबल्स रिलीज हो, क्लियर हो. हंसते खेलते मुस्कुराते हुए सभी अनप्लेजेंटनेस समाप्त हो. एंड वी ऑफर इट टू द फायर देन, यू नो. सो ऑन द डे ऑफ फुल मून, देन यू अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी फुल मून की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए. ट्यून इन टू द वाइब्रेशंस ऑफ द फुल मून, द पूर्णिमा का चांद, एंड लेट इट सपोर्ट यू. एंड वेरी वेरी विलिंगली इसको मन ही मन में पढ़ते हुए I release all of this with ease and peace. Thank you. Thank you, full moon energies. Thank you, sacred fire, for supporting me to release all my tensions, burdens, and worries with ease. You know, I'm completely free of them. And then you offer it to the fire and you burn it. With awareness, you burn it and you release it with peace. उसको जला दीजिए. अग्नि में आपकी सभी परेशानियां जलकर समाप्त हों, समाप्त हों, समाप्त. और ऊर्जा शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो. ब्रह्मांड में जाके सभी ऊर्जाएं, सभी दूषित ऊर्जाएं समाप्त हों और हमारी ऊर्जा शुद्ध हो. Whenever you clean yourself out of the burden, we clean our energy systems and then we infuse love in our bodies. So let it burn.
टेक योर टाइम, मे बी ड्रिंक सम वाटर. पानी पीने का मन है तो पानी पी लीजिए. अब सभी 1 से 2 मिनट लेंगे. अगर एशेज हैं या कचरा है उसको या तो गेर आइए, फ्लश कर दीजिए, बाहर पौधों में डाल दीजिए, कहीं भी बाहर डाल आइए सभी लोग. उसको जस्ट या अभी उसको साइड पर रख दीजिए. अगर अभी बाहर जाने में गेट वगैरह खोलने पड़ेंगे, अभी साइड पर रख दीजिए. डिस्पोज द रिमेन्स इन अ व्हाइल. टेक अ मिनट. आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू. But Hina, can we also do this ritual later? या यू कैन. मतलब इसको हम बाद में भी जला सकते हैं ना? या यू कैन. आराम से जब भी आफ्टर द सेशन और एज वेल यू कैन बर्न. ठीक है, थैंक यू. ओके, वापस आ जाइए सभी लोग. अब अपनी कैंडल्स वगैरह को थोड़ा साइड पे रखना है तो रख सकते हैं. ठीक है, सब हम आज की मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं. Is everybody back? You can show me a thumbs up or anything like. Okay, great. I mean, जो लोग स्क्रीन पर हैं that तो I can see. बाकी लोग great. चलिए, so now let's go ahead. So Vesak. So Purnima comes like every month. Okay, wait a moment. Okay, Dr. Harita ji, I'll wait. तो अभी सब मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाइए तब तक. बहुत सुंदर प्रोसेस है. This process of Vesak, we do a lot of full moon processes with each other in our Urja groups and everything. But this process I did in 2019 during Vesak. And it's a very deeply healing and very moving process, at least for me. I don't know about you guys. So, बड़ा ही soulful experience होता है. So I am a person who adores and admires Gautama the Buddha. So while Gautama the Buddha is that Buddha that you see, this Buddha, he is not Buddha, he is Gautama the Buddha, he is Siddhartha Gautam. So his name is Siddhartha Gautam, the Buddha. So what do we mean by the Buddha? So Buddha is one who is awake. Buddha is one who is awake. So awake from what? So in the deep slumber that our humanity is in, where the people have no idea of the life energies. They're living and everybody is living beautifully. And I hope at least everybody lives beautifully. But one aspect of life some people are missing, which is actually understanding life. They are living life, but they are not experiencing life. They are not understanding life. So be living life and understanding life में फर्क है. And इसको मैं जितना मर्जी समझा दूं textually and theoretically, वो तब तक अंदर नहीं घुसेगा जब तक unless you start experiencing life. Otherwise it will just remain another Bhagavad Gita ka text or another Jiddu Krishnamurti or another Ravi Shankar ji or another, some Paulo Coelho or Eckhart Tolle or anybody or Deepak Chopra's text only.
एंड यू ऑल हैव दोस टेक्स्ट्स इन एम्पल. नहीं है क्या किताबें आप लोगों के पास? बट वो अगर मैंने भी अभी टेक्स्ट ही देना है तो फिर इट वॉन्ट मेक अ डिफरेंस. सो हम आपको एक्सपीरियंस देंगे. My only thing is that maybe those who are new today and those who have been on the path, may you again be introduced to certain life energies by the universe so that you also begin to become aware of life energies. जो आपकी प्राण शक्ति है, आपको प्राण शक्ति का अनुभव हो. That is what our intention is. And उस अनुभव से आपकी जिंदगी it drives towards more progress. Progress of what kind? Of all kinds. अब वो तो आपको देखना है ना कि आपको कैसा प्रोग्रेस चाहिए. It's an overall progress in whatever area of your life. Whether you want to become more skilled in your business, in your job, कारोबार में वृद्धि हो, दिमाग में वृद्धि हो, भावों में संतुलन हो, शरीरात्मक वृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, जैसा भी हो, that you have to choose. But overall progress is what my intention is. Okay. So out of all Purnimas, there is one Purnima in which we say that, which was also the birthday of Buddha, and which was also the day of enlightenment for Buddha, the Gautama the Buddha. So I wish that it also becomes the day of enlightenment for many of us. And enlightenment doesn't mean, the boom. Also enlightened people don't have to react and respond differently. Your actions always do not justify that you're enlightened or not. Even if you're enlightened, you are still trying to understand day by day how to live your life. So a lot of you are beautiful, enlightened masters sitting here and attending the meditation. But you're just polishing that. So some of you are here to get enlightened. Some of you are here enlightened already. You're just removing the grease. With every process that you do with us, you're removing the grease. So it's enlightenment को भी एक तो ना बड़ा शोशा बनाया हुआ है कि कि गुरुओं में ही होती है. So this guy Jeff Brown calls it very rightly, it's let it be enlivement. So I like that word. Let it be enlivement. Maybe understand life beyond what we think of life is. Right? So this Buddha Purnima is also called as Vesak. अभी बहुत कहानियां. जब मेरे 4-4 घंटे के इन पर्सन सेशंस होते थे तो मैं पूरी की पूरी कहानी सुनाता था. वैसाख क्या है, तो वैसाख वैली क्या है, तो ये क्या है, तो वो क्या है. बट हमारा आज 1 घंटे का सेशन है जिसको मैं खींच के 1.25 घंटा कर दूंगा. तो इसलिए मैं कहानियां आज कम रखूंगा. So this is a very, very powerful day, at least for me, because as somebody who admires Buddha's energy, Gautama's energy, very beautiful day for all of you to harness something in your life. Not only today, every day. But we are making an effort, a collective effort today once again. Okay? So are we ready? Are we ready for a meditation? थोड़ा सा फास्ट कर लेना फैन को और इसको बुझा देगा. नहीं ओपन मत रख, इसमें थोड़ा पानी डाल के बुझा दे. I just wish I had this power कि मैं यहाँ से स्टली पंखे हिलाऊं और लोगों के पंखे तेज और धीरे हो जाएं. I just wish. I remember one of my teachers telling me something in years back, and I don't know if my mother has joined this live or not. I used to tell her this thing घर आके कि my so and so teacher told me कि if you master your astral body this much, आप दूर से बैठे बैठे अपने पंखे चला सकते हो और गीजर ऑफ कर सकते हो. And later when I realized, when certain kind of wisdom came in me, I realized no, the process was different. It was not literally astral body se pankha band karna. It was astral body se asking somebody else to pankha band karna. But this is what my teacher misinterpreted and miscommunicated it to me, that Ujjwal, if you will master your astral body, you will go. and वो मुझे यही कहते थे, घर में गीजर ऑन भी भूल जाओगे, गैस खुली छोड़ दिया तो आप बंद कर दोगे एस्ट्रल बॉडी से जाके. मे बी वो होता भी होएगा, but in my understanding, how I use that tool is to go and tell somebody else telepathically to do it. So I wish, whosoever जिसको पंखा धीरे कराना था उनका हो गया है. So now we are beautiful 80 above people. So let us close our eyes, everybody. पहले हम एक गाना सुनेंगे आंखें बंद करके, which is so आज मैं आप लोगों को गाने सुनाऊंगा, because हम लोग बहुत ध्यान तो करते ही हैं, but there are some musics by Sounds of Isha, which are very Buddha friendly, like it बहुत ही मेरे तो दिल के करीब हैं वो गाने. One is on moon, one is on Buddha. So we are going to listen to the song. Okay, so close your eyes, everybody, as I'm going to guide you.
We are going to understand the journey of moon through this sound. If you, अगर आपको समझ आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ आता है तो आप शांत होना शुरू हो जाइए. अपनी आंखों को धीमे से बंद कर लेंगे सभी लोग. आंखों को बंद रखते हुए, सुंदर मधुर स्वरों को अपने आसपास रखते हुए, पूर्णिमा की शक्ति से जुड़ेंगे. ब्रह्मांड में सुंदर सुपर मून को विजुअलाइज करेंगे. Visualize this beautiful ball of light, our moon. And for the next 4 to 5 minutes, breathe in the energy of moon in your body. सुंदर सफेद रंग का चंद्रमा का प्रकाश कण कण में आपके प्रवाहित होना शुरू हो रहा है. Take your complete attention to your breath. सारा ध्यान अपने श्वासों पर. चंद्रमा को अपनी आंखों में देखते हुए, चाहे आप अंदर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, चंद्रमा की ऊर्जा हर जगह है. Moon is everywhere. Visualize the energy of the moon and just breathe with it. Breathing in the light. Connect with the energies of your masters, your gods, your gurus. Connect with your breath. Take this time to calm down and relax. This energy of the moon is always around, whether it is pure darkness, whether it is pure light. The moon regulates so many cycles in our life. पूर्ण अंधेर और पूर्ण प्रकाश में चंद्रमा हमेशा आपके आसपास है. आपके मन का स्वामी चंद्र है. Take a minute more to just be very mindful of the full moon around today as we prepare our bodies to connect deeply with the energy of Buddha today, to explore Buddha consciousness.
keep your eyes closed. Tuning into the vibrations of the full moon, the cycles of the moon. Praying your gratitude to the energy of the full moon. Invite it in your body, invite it in your breath, invite it in your heart. You are tuned in. Just with the thought, you are tuned into the vibrations. A very powerful day today. And then with your eyes closed, keep your eyes closed, my dear friends. On this beautiful day of Vesak, I would like you all to set an intention. अपनी आंखों को बंद रखते हुए आज इस बहुत ही सुंदर वैसाख के दिन पर भाव डालेंगे, ब्रह्मांड में कैसा भाव डालेंगे, that I'm willing to raise the levels of my consciousness. मैं अपनी चेतना को परम चेतना से एकाकार कराने के लिए तैयार हूं. मेरी ऊर्जाएं ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ एक आकार हों. I'm ready to walk upon the path of self-realization and self-mastery. मैं अपने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इस जीवन को शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से, सुंदर रूप से जीने के लिए तैयार हूं. I'm willing to raise the levels of my consciousness. मेरी चेतना परम चेतना के साथ एक आकार हो. मेरा संबंध मेरी पूर्णात्मा के साथ हो. May I be one with my higher self. Set that intention in your heart. Let the universe know that you're willing to walk upon the path in beauty and in pure divine union and communication and connection with your higher self. अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होने के लिए इस ध्यान को आप करने जा रहे हैं. Honoring all the masters and the gurus. Let your gurus be with you. Let your masters be with you. In your heart, honor Gautama, the Buddha, Siddhartha Gautama, the Buddha, one who is a very beautiful image of the Buddhahood. सभी का ऑनर करेंगे, सभी को अपने मन में से प्रणाम करते हैं. प्रणाम करते हुए सभी ईश्वर गुरुओं का धन्यवाद प्रणाम करते हुए ट्यून इनटू द एनर्जीज वर्किंग विद यू इन दिस लाइफ टाइम. उन सभी ऊर्जाओं से, उन सभी प्राण शक्तियों से संबंध जोड़ते हुए आंखों को बंद रखेंगे और हम सभी कुछ मिनट तक ओम की चैंटिंग करेंगे. अपना और अपने वातावरण का ऊर्जा स्तर इंक्रीज करेंगे. हम लोग ओम की चैंटिंग करेंगे. मेरे साथ सभी लोग पूरे तरीके से अपने दिल से ओम को महसूस करते हुए, फीलिंग द चांट ऑफ द ओम, फीलिंग द हमिंग इन योर फुल बॉडी. चांट विद मी. लेट्स बिगिन. लंबा गहरा श्वास लेके Continue with me. Feel the humming in your body.
Allow the vibrations to flow in each and every cell of your body. Eyes closed. Stay with the humming. More powerfully than ever before. कंपन को पूरे शरीर में महसूस करते हुए raising your vibrations. Five more times with me. Two more times. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. And with your eyes closed, allow yourself to feel the vibrations in each and every cell of your body, my dear friends. Feeling the vibrations in झंझनाहट को, इन कंपन को अपने कण कण में, शरीर के हिस्से हिस्से में महसूस करते हुए. Feeling the vibrations in each and every cell of your body, rhythming and realigning to the pure state of bliss consciousness. पूरी आनंद रूप में आपके शरीर को संतुलित करते हुए, ऊर्जान्वित करते हुए, अपना सारा ध्यान अपनी श्वास और शरीर पर रखते हुए शांत हो जाइए, विश्राम कीजिए. शांत हो जाइए और विश्राम कीजिए. Take your attention to each and every part of your body. अपने ध्यान को सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपके शरीर का कण कण जागृत हो रहा है.
Buddha is one who is awake. Allow your body to feel awake. Feeling this energy, we are going to invoke the energy, the Buddha in our hearts, in our minds, in our spaces. हम बुद्ध की ऊर्जा को अपने मन, शरीर, आत्मा, अपने स्थान में, अपने वातावरण में आवाहन करेंगे उस शक्ति का, और हम एक बहुत ही सुंदर मंत्र का इस्तेमाल करेंगे. इस मंत्र का अर्थ है that whenever I feel low, I will go to Buddha. Whenever I feel low, I will go to my Sangha. Whenever I feel low, I will follow my dharma. जब भी मेरा मन अशांत है, मैं बुद्ध की तरफ जाऊंगा. जब भी मेरा मन शांत है, मैं अपने संघ की तरफ जाऊंगा. जब भी मेरा मन शांत है, मैं अपने धर्म को फॉलो करूंगा. यहाँ पर धर्म रिलीजन नहीं है. धर्म आपका रिलीजन नहीं. धर्म आपके जीवन का पर्पस है, आपके जीवन के कार्य हैं. Whenever I wish to be energized, I will follow Buddha. Whenever I wish to be energized, I will follow my Sangha. Whenever I wish to be energized, I will follow my Dharma. जब भी मैं अपने प्राण ऊर्जाओं को शक्तिशाली करना चाहूंगा, मैं बुद्धा के पथ पर चलूंगा. मैं जब भी अपनी प्राण शक्ति को ऊर्जान्वित करना चाहूंगा, मैं संघा को फॉलो करूंगा. मैं अपने संघा के साथ रहूंगा. मैं अपने संघा को समझूंगा. मैं जब भी अपने मन को, अपनी प्राण शक्ति को ऊर्जान्वित करना चाहूंगा, मैं अपने जीवन के कार्यों को, अपने जीवन के धर्म को, अपने पर्पस को, अपने धर्म को, अपने धम्मा को फॉलो करूंगा. तो इस सुंदर मतलब के मंत्र को अब हम सभी 3 बारी जपेंगे मेरे साथ. आंखों को बंद रखते हुए, बुद्धा का अपने मन में ध्यान करते हुए, हाथ को जोड़कर या हाथ को मुद्रा में रख के, या अपने हाथ को अपनी थाइस पर ओपन रख के फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई. बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि. आंखों को बंद रखते हुए, कीपिंग योर आईज क्लोज्ड, simply watching your breath, my dear friends. Know that you are ready to now observe your breath in a way that you are willing to go deeper into states of consciousness. अपना सारा ध्यान अपने श्वास के आवन जावन पर रखते हुए अपने शरीर को शांत होने देंगे. अपनी श्वासों को नॉर्मल और नेचुरल रखते हुए अपना सारा ध्यान अपने श्वास के आवन जावन पर. Taking your complete attention to your breath, my dear friends. Breathing in and breathing out very, very gently, very, very normally. Just stay with your breath. Watch your breath. जब से आपका जीवन शुरू हुआ है और जब तक आपका जीवन आपका रहेगा,
आपकी श्वास आपके साथ रहेगी. From the moment you are born till the time you will be alive in the physical body, the breath stays. Your breath is a master. Your breath is the master. Your breath is your guru. अपनी श्वासों पे सारा ध्यान रखते हुए सुंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने शरीर में महसूस करते हुए पूरे मन शरीर आत्मा को ढीला छोड़ते चले जाएंगे. सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक सारा शरीर आपका शांत हो रहा है. Just watching your breath. Your complete attention on your breath. Feeling this very, very beautiful sense of deep relaxation in the body. This is called as Anapanasati, to stay with your breath, to stay with the inhalation and the exhalation. अपने श्वासों के आवन और जावन के साथ रहना. Even if thoughts are coming, that's okay. Come back to your breath. Just watch your breath. Be very, very mindful of your breath. And as you do that, know that you're ready to move ahead and take a step forward and experience Buddha consciousness. अब आप सभी बुद्ध की परम चेतना को महसूस करने के लिए तैयार हैं. While being in the state of Anapanasati, my dear friends, go deeper and deeper, deeper and deeper, much deeper. Breathing in and breathing out. Allow yourself to breathe very mindfully, becoming totally comfortable. ध्यान की मुद्रा में लीन होते चले जाएंगे, ध्यान को गहरा करते चले जाएंगे. श्वासों के आवन जावन पर पूरा ध्यान नियंत्रित करते हुए मन शरीर आत्मा को शांत होने देंगे और सारे ध्यान को अपनी श्वास पर रखते हुए मेरे संगी साथियों, I invite all of you to visualize and imagine. Feel yourself entering a heavenly garden. महसूस करेंगे एक दिव्य गार्डन में, बहुत ही सुंदर गार्डन में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां मन शरीर आत्मा प्रसन्न हो रहा है. It's a very divine garden in the universe. खूब ईश्वरीय शक्तियों से युक्त ये गार्डन महसूस करेंगे, देखेंगे, इमेजिन करेंगे. Lush green grass, fruiting trees, blooming and blossoming flowers. रंग बिरंगे फूल हैं, सुंदर पेड़ हैं, हंसती खेलती मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है. Such clean water rivers are flowing and the birds are chirping. Very fresh, very rejuvenating vibration. बहुत ही आनंदमय उत्सव बनता जा रहा है. As the air touches your skin, it allows you to be deeply and completely relaxed.
As the air touches your skin, it allows you to be deeply and completely relaxed. जैसे जैसे सुंदर वातावरण की हवा आपको छूती चली जा रही है, कण कण में, रोम रोम में शांति प्रकाशमान हो रही है. Allow yourself to enter a very deep state of relaxation. Very deep state of relaxation, my dear friends. And you're walking in this garden, इस lush green grass पर चलते चले जाओ और चलते चलते विचरण करते हुए. Keep releasing all your stress in this train. Keep releasing all the strain from your body cells. Keep releasing and allow yourself to be free of any tension. Allow yourself to be free of any strain, of any thought, and deeply relax. आपके सर के ऊपर का आकाश भी सारे बादलों से मुक्त होता चला जा रहा है, नीला गगन बनता चला जा रहा है. ये सारी परेशानियों के काले बादल समाप्त हो रहे हैं और बादल समाप्त होते होते आपका मन भी खाली होकर शांत हो रहा है. सुंदर नीला आकाश शांत मन का आभास करा रहा है. Clean blue sky is bringing such a peaceful feeling in your clean, crystal clear mind. Watching your breath, allow a soft, shimmering, beautiful light to pour upon from the sky. आकाश से वातावरण के ब्रह्मांड के ऊपर से आते हुए एक सुंदर चमकदार हल्की रंग की ऊर्जा को देखेंगे. Let the soft and relaxing color show up. Let this color be natural. It can be any soft, light color. Very relaxing, very soft, very beautiful color of light. And let it enter your crown chakra. Let it enter each and every chakra of your body. सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक आपके पूरे शरीर में ये सुंदर चमकदार ऊर्जा प्रकाशमान होती चली जा रही है. Allowing this beautiful, soft and shimmering light to fill you from the head till your toe. सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक कण कण में ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आपका कण कण शांत, संतुलित और मधुर हो रहा है. शांत, संतुलित और स्वस्थ हो रहा है. This beautiful light is flowing from your forehead to your eyes, taking your attention to your ears. Keep breathing and keep seeing the light flowing. आप इस ऊर्जा से नहा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो. Keep watching this light. Clean your arms. दोनों बाजुएं सुंदर और शांत रूप से इस ऊर्जा से भर रही हैं, प्रकाशमान हो रही हैं. हाथों की हथेलियों को देखते हुए पांचों उंगलियां दोनों हाथों की. Watch your palms and all the fingers in both of your hands filled with this soft shimmering light. Fill your complete upper body, your torso, your chest, your heart, the upper back, flowing through your stomach, your intestines, middle back, lower back, side of the body. आपकी कमर, दिल, दिमाग से होते हुए, आपकी लंग्स से गुजरते हुए, कंधों को शांत करते हुए, पूरी पीठ को संतुलित करते हुए, पेट और आंतड़ों से गुजरते हुए, निचली कमर के भाग में प्रवेश करते हुए, flowing through your abdomen region, जनेंद्र भाग से गुजरते हुए, flowing through your genitals, flowing through your thighs, flowing through your thigh muscles, flowing through your hip region, थाई से होते हुए आपके घुटनों की तरफ प्रवाहित होते हुए सुंदर सुनहरा प्रकाश प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो. मन शरीर आत्मा को शांत करता चला जा रहा है. Flowing through your legs, your shins and your calf muscles, आपकी टांगों और पिंडलियों से गुजरते हुए, going to your ankles, एड़ियों तक जाते हुए, to your feet, to the soles of your feet, my dear friends, पांव के तलुओं तक जाते हुए, आपके पूरे शरीर को दिव्य ऊर्जा से प्रकाशमान करते हुए,
nourishing you and filling you with this very beautiful divine love and light. Embody this light, raising your frequency, raising your consciousness, परम चेतना को आपके शरीर में जागृत करते हुए just keep on absorbing this beautiful light. सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक आपका सारा शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो, संतुलित हो, स्वस्थ हो और ऊर्जान्वित हो, ऐसी कामना करते हुए देखो कितना आनंद आना शुरू हो गया है शरीर में, मन में, कण कण में, रोम रोम में आनंद की भावना प्रकाशित हो रही है और शरीर दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण है. Your full body is nourished with light, pure consciousness of bliss. And as you are in this beautiful state, आप इस सुंदर गार्डन में चल रहे हो, walking in this peaceful garden, इस गार्डन में विचरण करते हुए, you see a very beautiful golden staircase in front of you. बहुत ही सुंदर विशाल गोल्डन सीढ़ियों का स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जा रहा है और आकाश में जा मिल रहा है. In this garden you see a very beautiful golden staircase moving upwards and merging with deep white light. सुंदर सफेद बादल deep dense white clouds में जाके higher planes में जाकर एकाकार हो रहा है, allowing you to connect to the higher dimensions of masters and angels, gods and guides. As I will count from 1 to 10, मेरे 1 से लेकर 10 की गिनती में आप इस golden staircase को चढ़ना शुरू करेंगे and you will climb up and reach the higher planes. मेरे 1 से लेकर 10 की गिनती तक आप इस golden staircase को चढ़ते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे, higher planes की तरफ. To awaken the Buddha consciousness within you, my dear friends, go near the staircase. Go near the golden staircase. Golden staircase पे जाएंगे. सकारात्मक संतुलित ऊर्जाओं को अपने शरीर में महसूस करते हुए शुरू करेंगे. 1. Take a step forward. अपना कदम रखेंगे और golden staircase की सीढ़ियों को ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे. 2. Raising your consciousness, going up and up and up. As you're climbing the staircase up and up and up, you are raising your consciousness, lifting up and up. 3. Fully ready. पूरे तरीके से तैयार हैं आप ईश्वर से मिलने के लिए, बुद्धा की शक्ति को महसूस करने के लिए. 4. Up and up, moving towards Buddha, my dear friends. Going up and up and up, my dear friends. 5. You're so relaxed. You're so much at ease. 6. You are experiencing so much of joy and expansion. शरीर में आनंद रूपी भाव से ईश्वरी ऊर्जाओं का आभास होता चला जा रहा है. 7. You are feeling the vibrations raising. आपके शरीर की ऊर्जाएं उठती चली जा रही हैं, उत्तम होती चली जा रही हैं, शक्तिशाली होती चली जा रही हैं. 8. Going up and up and up. ऊपरगामी की तरफ आपकी चेतना चलती चली जा रही है, आपकी चेतना ऊपरगामी होती चली जाती है. 9. You're completely ready. You're at the top of the golden staircase. आप golden staircase के top तक पहुंच गए हैं. And you're ready to enter the consciousness, the land of higher dimensions, beyond these white clouds. 10. You're completely amongst the white clouds. कुछ नहीं दिख रहा है, सफेद ही सफेद बादल हैं, सफेद ही सफेद बादल हैं. और अब आप इन बादलों को चीरते हुए ईश्वरीय स्थान पर हायर डायमेंशंस में बुद्धा की ऊर्जा में प्रवेश करेंगे. Everything is white and beyond these clouds, beyond this white clouds is the consciousness of God, consciousness of Buddha. And जैसे ही मैं enter now बोलूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा प्रवेश कीजिए, आपके कण कण में, रोम रोम में एक गश महसूस होगी, एक ऊर्जा महसूस होगी. You will feel a gush of energy uplifting you into Buddha consciousness. My dear friends, go beyond the clouds and enter now. प्रवेश कीजिए.
प्रवेश कीजिए बुद्ध की परम चेतना में. Enter now. And you now enter a higher plane. You enter a higher dimension now. आपकी आत्मा परम चेतना के साथ एकाकार हो रही है. So powerful, so energetic, so divine. बहुत ही ईश्वरीय, बहुत ही दुर्लभ, सुखी ऊर्जाएं, शक्तिशाली ऊर्जाओं का आभास आपके कण कण में, रोम रोम में आपको महसूस हो रहा है. यू आर एंटरिंग द आनंद कॉन्शियसनेस, your pure bliss consciousness in your body, experiencing. See the Buddha in front of you. जिस भी रूप, आकार, प्रकाश, प्रेम रूपी आकाश, आकार और रूप में आप बुद्धा को देखना चाहते हैं, आपके सामने बुद्धा प्रकट हो. मन ही मन में बोलिए, हे बुद्ध की शक्ति, हे ईश्वरी शक्ति, मेरे समक्ष उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो. We invite the Buddha consciousness. बुद्धा के रूप में, प्रेम व प्रकाश के रूप में, जिस भी रूप में आप बुद्ध को समझते हैं, बुद्ध को महसूस करते हैं, बुद्ध को देखते हैं, उसको अपने समक्ष महसूस करते हुए दर्शन कीजिए. दर्शन अभिलाषी हैं आप. दर्शन कीजिए ईश्वर की शक्ति का. Experience the higher consciousness. Experience the higher consciousness, my dear friends. Experiencing the power of Buddha. Experiencing the presence of Buddha. Experiencing the energy. Keep your eyes closed, my dear friends. Experiencing. Keep your eyes closed, connecting to the energy of higher states of awareness. All the joys, activating the ananda in your consciousness. अपने जीवन में खुशियों को एक्टिवेट करते हुए ईश्वरीय शक्तियों को जागृत होने दीजिए. Sit with the Buddha in front of you and just soak in the grace. Just soak in the grace of the Buddha now. Experiencing him. महसूस करते हुए इस परम शक्ति को, परमानंद को, परम स्वास्थ्य को. Attune to his vibrations. For a minute more, my dear friends. Attune कीजिए, धुन में आ जाइए इस परम चेतना और परम शक्ति के. Take your complete attention to the consciousness of Buddha, experiencing primal vibration, experiencing the primal energy of pure, undivided unity consciousness. One that is beyond, one that is your true source. Feeling the rise in the vibrations. See whatever you are seeing. Feel whatever you are feeling. Hear whatever you are hearing. Experience and communicate with Buddha. वार्तालाप कीजिए, महसूस कीजिए जो भी आपको महसूस हो रहा है. वार्तालाप कीजिए बुद्धा से. Allow a beautiful dialogue to set up and request him to expand his consciousness. Request him to expand his consciousness. जैसे एक ऊर्जा का बुलबुला बढ़ता चला जाता है, बुद्ध की कॉन्शियसनेस, बुद्ध की परम चेतना इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आप बुद्ध की कॉन्शियसनेस में एकाकार होते चले जा रहे हैं. आप बुद्ध के इस ऊर्जा के गोले में प्रवेश कर रहे हैं और आप बुद्धा की कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहे हैं. आप बुद्धा की एनर्जी, ऑरा का, बुद्धा की कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बन रहे हैं. कण कण में, रोम रोम में परम चेतना, परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम सुख की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत हो रही है. Oh beloved Buddha, you say to him, I wish to experience you. Please allow your consciousness to become a part of mine. हे बुद्ध की शक्ति, हे ईश्वरीय शक्ति, मैं आपको महसूस करना चाहता हूं. मेरे रोम रोम को अपनी दिव्य ऊर्जाओं से प्रचुर कीजिए, प्रकाशित कीजिए. मेरा रोम रोम ईश्वरीय ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो. Oh my beloved Buddha, I wish to experience you. Please allow your consciousness to become a part of mine. Communicate and allow this beautiful dialogue to show you certain divine visions, divine feelings, divine messages.
Say to the Buddha, say to the consciousness of the divine, bless me, O Buddha. As you open the channels to receiving grace in my life, let the grace of the divine enrich me. I open my heart to receiving divine grace. ब्रह्मांड में खूब कृपा है. आप अपने दिल को खोल लीजिए इस कृपा के लिए. जब कृपा है हमारे जीवन में तो सब कुछ सफल होता चला जाता है. सभी कार्यों में तरक्की, सभी उपचारों में सफलता, सभी ध्यान की सफलता, मन की शांति अपने आप हो जाती है. Bless me, Buddha, as you open the channels of divine grace, receiving divine grace in my life. As you awaken the potential in me to reach my highest potential, bless me, ताकि मैं अपने जीवन के सर्वोच्च मंजिल को आसानी से, हंसते हुए आनंद रूपी भाव से जी सकूं. इस संसार में कमल बद खिलकर इस संसार को सुंदर तरीके से जी सकूं. आसपास जो भी हो रहा है, मैं कमल बद खिलकर like a lotus shining even in the mud, looking so beautiful, pious and pure, may I blossom and may I live my life fully. O Buddha, become a part of me and awaken the Buddha within me. मेरे अंदर का बुद्ध जागृत हो. Stay with this consciousness, my dear friends. Feel this energy. Keep your eyes closed. As you tune in, see yourself becoming one with Buddha. अपनी ऊर्जा को और बुद्धा की ऊर्जा को एक होते हुए देखिए. आपकी चेतना परम चेतना में मिलकर एकाकार हो रही है. बूंद सागर में आपकी बूंद सागर में समा रही है. As I am going to count from 1 to 3, you are going to experience your consciousness becoming higher consciousness, your consciousness uplifting, becoming one with that of divine. 1. You're becoming one with the Buddha, merging with the Buddha. एकाकार हो रहे हैं आपकी चेतना और बुद्ध परम चेतना एकाकार होते हुए. 2. Fully tuning in, merging, awakening the highest consciousness in each and every cell of your body, enlightening with the great light of enlightenment. 3. Totally merged. There is nothing else but Buddha. Totally merged, my dear friends. You are a Buddha. You are a Buddha. You are a Buddha. We are a Buddha. I am a Buddha. My dear friends, completely merge into the consciousness. परम चेतना में आप समा चुके हैं. आप ही परम चेतना हैं. You are an awakened being. You are an awakened being. You have always been awakened. You are just reminding yourself that you have the full potential to be a Buddha. That you are a Buddha. As you are fully tuning into the consciousness of the Buddha, बुद्ध परम चेतना में एकाकार होते हुए, affirm to yourself, I am a Buddha. I am a Buddha. I am a master. I am the light. Allow yourself to feel this masterful presence all around you. Open yourself, receive. I am a Buddha. I am a master. I am the light. Allow yourself to feel the surge of this energy, inviting the Buddha consciousness, completely integrating it in your cells. Allow yourself to feel the surge of this energy.
Feel the surge of this energy as you uplift your vibrations, allowing yourself to feel the masterful vibration in your full body. You are a Buddha now, awakening this potential in your body fully. I would like you to feel and see that if you live like a Buddha, how would you live? How would your body be? If you live like a Buddha, as a master, as the light which you are, how would your responses be? What would you do? What would it take for you to integrate the Buddha's consciousness in all areas of your life? What would it take for you to allow the consciousness of the Buddha to fully radiate through you? Allow your consciousness to guide you and to channel this presence of Buddha through you. Your presence is powerful. See this primal vibration now beginning to radiate from you into your space. आपकी परम चेतना अब बड़ी होती चली जा रही है, शक्तिशाली होती चली जा रही है. आपकी बुद्ध चेतना, आपकी परम चेतना अब आपके कमरे में समाती चली जा रही है. कमरे से होते हुए पूरे घर में समाती चली जा रही है. आसपास बैठे सभी व्यक्तियों को बुद्ध की ऊर्जा का आवाहन, आभास हो रहा है. Everybody is being soaked into the consciousness of the divine. Let your primal vibration become so powerful, expanding your consciousness, your vibration, radiating it. एक सूर्य के भांति आप सूर्य बनते चले जा रहे हैं और ये प्रकाश कण कण में आपके घर से होते हुए, कॉलोनी से होते हुए, शहर, स्टेट, कंट्री से होते हुए पूरे ब्रह्मांड में चमक रहा है. पूरे ब्रह्मांड, पूरे ग्लोब में बुद्ध की कॉन्शियसनेस को, परम चेतना को, परम आभास को, परम सुख को महसूस करेंगे. फीलिंग योर वाइब्रेशन रेडिएटिंग, रेडिएटिंग, रेडिएटिंग. Total ananda, total peace. As you are alive on this planet, you are becoming a source of this beautiful primal consciousness, primal vibration. Radiating it fully. Become aware of this, my dear friends. Feeling the surge in this beautiful consciousness of the bliss, where you are fully alive, where you are fully present, where you are feeling the total undivided consciousness. I would like you to keep your eyes closed and feel whatever you're feeling in this expanded consciousness for a minute more. Bringing a beautiful smile, experiencing the consciousness of bliss, of ananda, allowing this beautiful Buddha to rise within you, the Buddha that you are. Give full permission for that Buddha to radiate its light. I am a Buddha. I am a master. I am the light. मैं एक बुद्ध पुरुष हूँ. मैं एक जागरूक आत्मा हूँ. मैं ही परम चेतना हूँ. मैं एक प्रकाश हूँ. मैं ईश्वरीय प्रकाश हूँ. पूरा कण कण में, रोम रोम में महसूस करते हुए feeling the surge of the energy. See as the light shines upon you. Allowing now gently and very, very relaxingly, slowly and gently bringing your awareness to your body. Knowing that you are this Buddha. You are the source of this beautiful primal vibration. Choosing to walk very, very beautifully on the path of awakening, self-mastery and self-realization. अपने जीवन के सर्वोच्च पथ पर चलने के लिए, to live peacefully and to live purposefully.
very, very smilingly, bring your attention back to your body. Coming through the staircase back into the garden, from the garden into your body. Allow yourself, my dear friends, with the full awareness of the undivided expanded consciousness, you are integrating back your beautiful awakened consciousness in your body. इस जागरूक परम चेतना को अपने शरीर में इंटीग्रेट करते हुए अपना सारा ध्यान उस गोल्डन स्टेयरकेस से वापस लाते हुए, उस गार्डन से वापस होते हुए अपने शरीर की कण कण में, रोम रोम में अवस्था में लेकर आएंगे। और अगले 3 से 4 मिनट सिर्फ अपने शरीर के साथ बैठकर सारा ध्यान अपने शरीर और अपनी शरीर की श्वासों में रखेंगे। अपने अंदर के बुद्ध पुरुष को ऑनर करते हुए, ऑनरिंग द बुद्धा विद इन यू, अपने अंदर के बुद्ध पुरुष को जागरूक अवस्था में महसूस करते हुए bring your total attention, my dear friends, to your body and take your attention to your third eye now. Take your attention to your third eye. अपना सारा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखते हुए हाथों को अपनी थाइज पर खुला रखेंगे और अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर कर लेंगे। हल्का सा ऊपर, अपना सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पर रखते हुए take your complete attention to your breath, my dear friends. Honoring the Buddha within you, my dear friends. Take your attention to your third eye. सारा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखते हुए breathing in and breathing out. Fully experiencing the energy. पूर्ण रूप से प्राण ऊर्जा को महसूस करते हुए कण कण में, शरीर के रोम रोम में ईश्वर ने आपको इस जीवन में सभी टूल्स को देकर जन्म दिया है। आप जो चाहें अपने जीवन में रच सकते हैं। परम आनंद, कंप्लीट हैप्पीनेस, जॉय, परम सुख, टोटल हैप्पीनेस, परम समृद्धि, टोटल प्रॉस्पेरिटी, परम स्वास्थ्य, एब्सोल्यूट गुड हेल्थ. You can create, you are the co-creator of your life. You have all the energy, you have all the resources. Your life is a beautiful experience. Make a choice today to live beautifully, to live peacefully, to live prosperously, to live healthfully. परमानंद के रूप में, परम स्वास्थ्य के रूप में, परम समृद्धि को जीते हुए, परम शांति को महसूस करते हुए, जीवन को सुंदर रूप से जीते हुए सभी अपने ध्यान को 1 मिनट और के लिए अपनी थर्ड आई पर रखेंगे। Breathing in and breathing out. Thirty more seconds, my dear friends. Ten, 9, 8, 7, complete attention on your third eye. 6, bring your breath back to normal. Normal, natural, tender, soft breath. 6, 5, 4, very gently bringing your awareness to your body, integrating the experience of bliss. 4, you are a Buddha. You are an awakened being. 3,
You are a master, fully embodying the mastery. 2, you are the light. You are the pure consciousness. Fully feeling in, integrating this experience. 1 and 0. Very, very gently. Very, very gently, whenever you're ready. Take your time, my dear friends. Slowly listening to the blissful music. Whenever you're ready. Becoming aware of this fullness and wholeness in your body. Begin to come back and open your eyes into a life of richness, fullness, and wholeness. Okay. So very, very relaxingly, everybody begin to come back. And before I listen to your experiences, today I ask for this question. Usually you do not hear me asking for the topics of self-realization, enlightenment, and awakening, because in the end the goal is that. But today, on the day of
Buddha Purnima, this line that you know कि या तो इस सृष्टि की परे की ज्योति मुझको मिलेगी या इस बोधि के तले मेरी काया ढलेगी is so meaningful. So I want to ask you, I want to put this question forth in front of all of you. What would it take for you to fully master your life, to become masters of your life energies? And when would you make it happen? I usually don't put people in this guilt ever. But today I put this question in you. Beyond what is happening in your family, beyond how your business is running, beyond how much harmonious relationship you have, of course, all of that add on to the path. But Buddha did not have it that easy. And not a lot of people. Today I ask you, what would it take for you to take charge of your life forces, your life energies? And when would you become a Buddha? Which lifetime? Till what time will you come to me for past life regressions, for retrieval from different past lifetimes? What would it take for you to activate all these powers in this lifetime? And who's asking you to become a guru? Who's asking you to start giving dikshas? I'm just asking you, what would it take for you to master your own life force energies? A real master is only the one who has mastered himself. He may not be able to, run the other horses, but he knows how to. And mastering your own chariot always doesn't mean that you are able to sort out each and every aspect. Life continues, the karma continues. Karma is being cleared even in the lives of those who so-called are proclaimed enlightened. They also have to go through the life karma. Okay, so living life with karma is a different topic. But ask yourself today, what would it take for you and how much time would you take? When would you start? When will you become a Buddha is not the question. When will you start? When will you start? Because even I don't have the answer for that when will you become a Buddha? But at least I don't have an answer, but I have a nudge that after this meditation, after this experience, may the seeds of being a Buddha awaken and activate fully, activate in you. Then it's your choice. Later, it's your own choice. Right? So thank you so much for giving me the opportunity to facilitate this meditation for all of you. You all can come on your screens. I would like to hear you guys today. And yeah, that's it. And I would just like to hear some experiences. I know a lot of you tell me that you like listening to these experiences, sharing with me later. So those of you jo shant rehna chahte hain, you can write it to me, but we can have some sharings. And others, thank you so much for joining. Good night and sleep well. Okay, bye-bye. Yeah. So who would like to share? Unmute. How beautiful. I'll put you on spotlight. Wait. How beautiful. So beautiful. Thank you. It's such a divine drawing. When I was drawing, I was thinking what I am doing today. Yeah. But again later, when you said, radiate your light and be one with the consciousness. Oh, this is such an apt, very beautiful, very beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody else feels like sharing everybody's in a deep trance here. Okay, I can understand that. Okay, so if you have any questions, you can ask. Otherwise, we will close today's meeting. I'm reading. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Thank you, everybody. Actually, Thank you. I'm speechless today. Who is speaking? This is Rekha.
Rekha Chinta. You have made us speechless. It was truly a very, very wonderful experience. I have no words to express my gratitude. Any word would be small to express my gratitude today. It was truly wonderful. Thank you, Ujjwal, and God bless you. May you keep doing such good work throughout your life. God bless you. Thanks a lot. Very kind of you to say that. Thank you, Joel. Thank you so much. As usual, it was a wonderful session. Thank Feel you. so good after this. Thank you so much. Thank you. Hi Ujjwal, I have something to share and also like ask your thoughts on. So I was thinking about the question that you just asked us, when will we all start our journey to be Buddhas? And so like two things came to my mind. One was, how this session started with that song about Chandra Jeevan, and it's almost as if um, you know, I I mean, do we understand our lives as phases of moon, right? And then sort of, be content with it because we have this deep realization, right? Or as you said, when will you take charge? Um, and sometimes it's almost as if when we're going through some deep suffering, right? And then we sort of, get this thought about how, this suffering is a part of our incarnation to release our karmic burden. And then so that is also leading us to our, final goal or our end. But then, I mean, is the process of becoming or like starting to become Buddha sort of accelerating that process? Or is it getting a deeper understanding of that karmic process? What does it entail actually? So there can be many, many answers that, no, answer is not a right word. There are many, many opinions I can share. But since you started with moon, let me talk it in the terms of moon, okay? Yes, our life is like phases of moon, but the moon doesn't care that whether I am a gibbous moon or I'm a new moon or I am a no moon or I'm a full moon. The moon knows what it is. लाइफ में चाहे सफरिंग है, मतलब आज लूनार एक्लिप्स था, whether it is going through an eclipse, see or suffering like an eclipse, some andhakar coming in front of you, is that making the moon black, or is it making the drishti or the light of it, which is being showered like a torch, just it goes like that? It doesn't affect the moon. It doesn't affect the moon. It sometimes affects the moon's light. And that is where we say moon is very wholesome. Or even if you take, a Suraj doesn't need any support to shine. अभी जैसे हम कहते हैं जो रात हो रही है, if we are just talking metaphorically, रात is also very pious for me, but if somebody says कि अंधकार is suffering, when the suffering comes in, when happiness comes in, daytime comes in, mine is opposite, but still. So do we say that the wholeness, the source of light, the bliss or the Buddha has gone? No, that stays. Life keeps on moving. Phases of moon keep on happening. But only the moon knows that it is whole. The understanding, it is a very experiential thing that can only be understood via experience. We will get sad, we will get angry, we will get this and we will get that. The only difference between a Buddha is that one, again, who is awake and who is ready to do something about it. And the other one is who goes into the trenches of darkness and says that now life is over here. Now nothing happens. Life is bad. Life is sad. It is only mine. मेरे साथ ही होता है, मेरे ही ऐसे हो रहा है. You're getting that deep, even we embrace tamasic pravritti as well. But we embrace it, and generally from tamas we begin to lift up. But somebody who's not even ready to embrace and is in complete mode of rejection of life, complete mode ki Chandra ek bari amavasya aayi thi, that is the reality of life. All light that shows line while and every day is just fake facade. The reality is darkness. That is the only truth and that is the only thing.
where you feel that, that is what life is, to the idea that life is actually all the time happening. A full moon is all the time there. A moon is always full only. It is only our perception of the moon which sees it in its highs and lows and shades and spaces. The day we will get into that realization, the experience of life changes. So the day we will realize that, yes, I'm a tentacle. I'm a tentacle on this in this body, and I have to live this tentacle life fully and very, very beautifully. That is why we keep on using the word higher self, because it cannot be explained in text or in words, and nobody can explain it. The moment you begin to get in tune with that Purnatma, you realize, these things, there are days doomsday comes and everything comes in, but there is something more. And that helps you come back to a state every time where, despite whatever is going on, even the worst of the things, when you're totally helpless, gone and shattered, the fire doesn't die. The fire doesn't go off. The fire is still sustaining. It may not be in its full glory, but it is sustaining. And that is what the representation of a Buddhahood is. That one whose fire is awake. One who has realized that beyond logic, beyond my understanding, beyond my perception, sukh of life is also life. Okay. Right. Thank you, Ujjwal. Anything else? Otherwise, we'll close the meeting. Thank you so much, Ujjwal. It was a great session. Me and my mother attended today. So she also felt really nice after attending it. This was her first time. When I see kids and mothers and old parents, it is a reminder for me to every time change my dialogue. It helps me. So I'm grateful you're bringing your family, into it. Yeah, thank you. Thank you so much, Ujjwal. Thank you, Vate. Thank you. Thank you, Ujjwal. Me and my kids attended the session. My younger kid is of 14 years of age, and How wonderful! How wonderful! Thank you, Vinita ji. Thank you, Ujjwal. Thank you so much. Yeah, thank you, Anshika ji. Thank you. Okay, so we are ready to close. Thank you so much, Ujjwal. It was very wholesome, if that's the word I can use. Yeah. Thank you. And thank you for offering this and doing it in such a remarkable way. Much, much gratitude to you. Thank you. Thank you. I'll quickly read the chat as well in case. Thank you, Abhinav. Thank you, Yash, Pragati ji, Arun ji, Alka ji, Anju ji, Padmaja ji, Juni ji, Niti ji, Dimpy ji, Niti ji, Nutan ji, Jyoti Chabria ji. In case you are live, I'm just acknowledging that. Yes, thank you. iPhone, thank you, iPhone. Thank you, Niti ji, Abhinav again. Yeah, Divyam Malpani, Pia Sayoni, Pia Abhinav, Jyoti ji, Rita ji, Veena, Vandana Gupta, Kajol, Tavleen, Dr. Harita, Nagmani ji, Seema ji, Nandini ji, Archana ji, Varun ji, Sunita, Narang, Rupal, Kulshrestha, Shreya, Yash, Raj. Okay, Sunita ji, that is Sunita. Yeah, Bhavya and Gitanjali. Thank you, everybody. So I'll close the meeting now. Good night and sleep well.